अजय देवगन और काजोल के लाडले युग देवगन का बॉलीवुड डेब्यू होने जा रहा है। बॉलीवुड बोले या फिर हॉलीवुड, आपको बता दें ये हॉलीवुड डेब्यू है, बॉलीवुड नहीं। जी हाँ, हाल ही में युग और अजय देवगन दोनों को ही कराटे किड लेजेंड्स के ट्रेलर लॉन्च पर स्पॉट किया गया, जहां इस मौके पर अजय देवगन और युग ने अपनी एसोसिएशन के बारे में बताया। बाप बेटे दोनों ने ही इस फिल्म में डबिंग की है। ऐसे में युग देवगन पापा सिंघम की अच्छी खासी पोल खोलते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर अजय देवगन ये भी बता रहे हैं कि उनका बेटा युग अपने मील्स को खुद रेडी करवाते हैं और अपनी फिजिक पर अच्छा खासा ध्यान देते हैं। यही नहीं, अजय देवगन का कहना है कि उनके बेटे ने इस फिल्म में डबिंग के लिए काफी मेहनत भी की है। मेहनत के साथ साथ उन्होंने खूब टेंट्रम्स भी दिखाए हैं। इसी बीच युग देवगन पापा की फिल्म सिंघम का फेमस डायलॉग भी बोलते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच काजोल को ये काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट लगा, जहां उन्होंने लिखा, टू प्राउड ऑफ माई बेबी, जस्ट वांना स्क्रीम माइन माइन माइन। आपको बता दें युग देवगन की ये पहली अपीयरेंस है जिसमें वो इस हॉलीवुड प्रोजेक्ट में एक किरदार के लिए डबिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। यही नहीं, अजय देवगन ने ये भी रिवील किया कि जब इस फिल्म की डबिंग हो रही थी तब उस टाइम पर युग देवगन के एग्जाम्स चल रहे थे। आइए अजय देवगन और युग की कुछ खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। Solo. Oh yeah! Rockstar. Yes, upcoming star. Yes. Yeah, rockstar. Everyone loves him. He inspires me a lot, and yeah, I don't know what to say. Do you remember that first action sequence you saw of Dad on screen, and you said, "Oh my God!" Now I didn't know it was him. What? Yeah. Which movie was it? I don't remember, but I didn't know it was him. And then I realized that he's the star, and then I couldn't believe it. देखो, टिपिकली हम लड़कियां घर पे बैठ के एक मूवी से डांस सीक्वेंस को कॉपी करते हैं, एंड बॉयज यूजुअली लाइक टू फाइट इट आउट इवन इफ इट्स इन एयर विद नोबडी इनसाइड. Did you ever copy Dad's action? All the time. Do you remember which ones? Which sequences? He keeps making fun of me most of the time. I did. And he keeps bullying me, by the way. I don't. He's lying. पर आपको याद है इन्होंने कौन से की कॉपी करी and you caught him maybe? No, not really. But what I'm very happy is कि बचपन से not because of films or things like this. इसको खुद ही शौक था. He's training in a lot of things. He works out on his own. He measures and calculates. Makes his own meals. In fact, decides his own meals. So he's very conscious like this. और ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैंने instill किया. It has come from within. So he's showing off his six-pack abs and going around the house. Kind of, he does that. All right. So I have a moment in the movie that you love. Yog, I'll come to you first. I love the moment when he's training him. So there's a scene where he's training him and he's really taking the life out of him, and that just reminds me of this guy. आप पोल खोल रहे हैं क्या? पापा की पोल खोल रहे हैं? तो क्या पापा ने आपको ट्रेन किया है, मतलब? That's what you're saying? बहुत. He trains me every time we go to the gym together. Ajay ji, you have to tell us about this. मतलब युग का ये debut है, we can't not know. But I'm hardly in the gym with him. So what is the training he's Most of the talking time about? he trains himself. Earlier I used to train him. Now he trains me. Oh. He started working. He was so excited and happy, and he started throwing tantrums also. Oh. But you have this dialogue in the He used to film. come home and say, "I'm a working man. I'm very tired. Don't disturb me." You're ready, babe. You're so ready for this. I'm so excited for you, bro. Okay, so you had this line in the movie, Singham wala line. याद है आपको? Yeah. बताओगे? You want to say it in the style that you said in the film? यार, एक ही दिन में सिंघम बनाओगे क्या? अजय जी, सिंघम बन गया है कि बनने वाला है कि क्या हो रहा है? I think सिंघम कोई किसी को नहीं बनाता. सिंघम बनाने वाला एक ही है. ओह
What a dahad, what a performance. What do you really feel about his performance? No, he's done very well. I think for me, he's been very natural. All whatever I've heard, he's dubbed it very very naturally. So and it sounds very real. Lovely. Karate Kid के आप कितने बड़े fan हैं युग? I love Karate Kid. I've been following it since like forever. I Yeah. love it. I watched all the films. I watched the Jaden Smith one. I watched Cobra Kai. I kept following the seasons of Cobra Kai, and now just to get this, it was really exciting. Were you watching it on repeat and that's why it's inside of you how this works and how this goes on screen? Probably. Was it easy to emote the action sequences because you have to, you have to feel the pain, you have to feel that entire thing on screen? It was confusing because it was my first time. Yeah. So to do that for like the first time, it was a little tricky. अब पापा ने कहा बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं. So before I ask you the last question, what is it that you're training in with all the fitness?